So today we will start a new topic that is called separation axioms. Okay. So we have seen one of them that is the house drop spaces. It is also called a T2 space. Okay. So again, so what is the name? Why this name T? So when topology was वॉइस ब्रेक हो रही है definition, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, वॉइस ब्रेक का कोई सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। हेलो सर, क्या सभी के साथ वॉइस ब्रेक हो रही है? हेलो, क्या सबके लिए वॉइस ब्रेक हो रही है? नो सर। और वॉइस ब्रेक हो रही तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में नेटवर्क नहीं है ना। So the earliest definition of topology, it was by Hausdorff. Okay, so it included a condition that made all the topological spaces what we these days call Hausdorff spaces. Okay, so later the separation axioms were studied under the name of accessible spaces, which we know now as T1 spaces. Okay, so in separation axiom, what we will learn is T naught, T1, T2, and T3 spaces. Okay, another thing that we will learn is normal spaces, and before this we will learn regular spaces. So the question is why this name T? So this was okay. So these T1, T2, T3 spaces, they were studied by Kitze. Kitze. He was a German mathematician. Okay, but these T are not coming from this T. Okay? So these T are coming from a German word. I don't know how do we pronounce it. NG. Check how do we pronounce it. So Treno, it's Treno. Okay, so these T, so Treno means separation. In German, Treno means separation. Okay, so therefore these T naught, T1, T2, T3. Can anyone recall the definition of Hausdorff spaces? Since we have already seen Hausdorff spaces, can anyone recall that? Hello? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है?
आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. तो भैया बोल क्यों नहीं रहे हैं? जब सुनाई दे रही है तो बोलिए ना। सभी को सुनाई दे रही है या केवल एक ही को सुनाई दे रही है? Yes, sir. सुना दे रहे हैं। हाँ तो भाई उसका रिप्लाई करना होता है ना यार। बताइए रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? अब करेंगे मुझे सर। बताइए हाउस ड्रॉप स्पेस की डेफिनेशन क्या है बताइए। आप लोगों ने ये अभी यूनिट 1 में इसको पढ़ा है, इससे पहले आप लोगों ने मीट्रिक स्पेस में पढ़ा है, और उससे भी पहले आप लोगों ने इसको बीएससी में पढ़ा है। तो हाउस ड्रॉप की डेफिनेशन तो आपको मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज द हाउस ड्रॉप स्पेस? Sir, suppose we have a topological space capital X, then the topological space capital X is said to be housed of space if we have two distinct points, say x1 and x2, Okay. belonging to the topological space X, such that there exist two neighborhoods, say v1, v2, where v1 is the neighborhood of x1 and v2 is the neighborhood of x2, such that they are disjoint. Then They the are space X disjoint. is called a house drop space. Good. This is the definition for house drop space. Okay. So here we assume means so let us start with a weakest separation form. So weakest means suppose we have a topological space, then we have two distinct points. Okay, how do we differentiate these 2 points? So you all know in case of indiscrete topology. So recall indiscrete topology. Which topology? Indiscrete. Okay. Can you distinguish 2 points via open sets in indiscrete topology? क्या आप indiscrete topology में आपके पास दो different points हो x और y, okay, in x, can you give me 2 open sets which contain x and which contain y and they are disjoint? Or can you No, sir. okay, or can you give me any open set in X in this topological space which contain X but does not contain Y? No, sir, because No, indiscrete because X, topological space contains only phi and x. phi and X. So X is the only non-empty open set. Okay, so therefore it will contain. So for two different points, you will not get two different uh, or any other open set. So only this X is the open set which contains all its points. Okay, so we ask whether we can distinguish 2 points x and y via open set. So the weakest thing, so what we will do, we ask whether there exists an open neighborhood which say u which contains x but does not contain y. Okay, and similarly does there exist uh, for x and y, does there exist any v which contains y but does not contain x? Okay, so this separation thing, so here we are separating x and y via this open set. Okay, so here is the definition for such kind of topological spaces where this property is satisfied, that for any two distinct points x and y, one of them has an open neighborhood. Okay, so say in this case x has this open neighborhood u, but this u does not contain y. Okay,
So this is called T naught space, or sometimes it is called Kolmogorov space. So Kolmogorov was a Russian mathematician. So a topological space X tau is said to be a T naught space, okay, if for each pair of distinct ones, say x comma y in X, okay, and x and y both are distinct. One of them has an open neighborhood, say open, not containing the other. So we have 2 point x and y in X and x not equal to y. This means for any pair, for such pair, there exists open set U containing X, but Y not in. Or so this is one case. Either this happen or so let me write this like this. There exists open set such that either this happen or the second thing happens. So either x in y or y in. So here y in u but x not in. One of these two holds. Okay, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए. So then we say X is a T naught space. So this space will be So, a sir, T what naught. is the difference between the Hausdorff space and T naught space? I'm unable to find the difference. Yeah, you are not able to find the difference. So here in Hausdorff space we have two neighborhoods. Both are different. Okay. Here we are saying there exists only one neighborhood. We are saying that there exists a neighborhood U such that this neighborhood does not contain the other point. So this means every Hausdorff space is T naught space. Okay, because you have in Hausdorff space you have two neighborhoods U and V. So this is for X, this is for Y. So in this case you have U such that X in U and Y not in U. Okay, so every Hausdorff space is T naught space. Do you see this point? Yes, sir. But there are spaces which are T naught but need not be Hausdorff. We will see. Okay. So so can anyone give me any T naught space? Okay, suppose X equal to A comma B. Now I am writing spaces. T1 is, so please tell me which space is T naught. Okay, whether this, oh, let me tau 1. So is tau 1 T naught? Is the tau 1, the topology tau 1 T naught? बताओ भाई. So, please repeat your question. Is tau 1 T naught? Is this topology tau 1 a Yes, T sir. naught space? Yes, This is, sir. you are saying yes. It is T naught because This is, here only one non-empty open set, that is X. so what are you saying? Is it T naught or it is not T naught? It is T naught.
Okay. Why? So can you see the definition again? So what do you need for T naught? What is the So we property need two or distinct points yeah, such here that they have you have one two of them distinct have points. the neighborhood, Okay, one of them has the neighborhood. What which else? do not contains the other point. Okay, is this is true in tau 1? Can you give me an open set in so can you give me an element of tau 1 which contains No, A sir. but No, sir. It not is not. contain It is B? not T naught space. So this means this is not T naught. This one is not T naught. Okay. Is tau 2 T naught? Yes, sir. It is T naught because here we have an open set A singleton. So this is Uh, T naught. if we take A and B, then we will find the neighborhood of A, but can't find B. Okay. So you are saying that for two distinct point A and B, we have this open set A which contains the point A, but it does not contain point B. Okay, this is what you are saying. Correct? Yes, sir. Okay. Is this topology T naught? Yes, sir. It is also T naught in the same way as tau 2. Okay. Is this topology T naught? No, sir, it is not T naught because we have X which contains both of the points A and B. अरे भाई वो तो यहाँ भी था ऊपर भी था X Yes, sir. है आपने ये रीजन तो ऊपर नहीं दिया Yes, sir. Sorry, sir. Uh, अगर ये रीजन काम करेगा तो ऊपर भी काम करता ना अरे ए और बी के लिए क्या आप ऐसे नेबरहुड ढूंढ yes, sir. सकते हैं Yes, sir. It is also T naught. इट इज आल्सो टी नॉट व्हाई Because we have two open sets, say singleton A and singleton B. If we take point A, then we have an open set A singleton in which B does not lie, and in the same way we have B singleton in which A does not lie. so this is also So T naught है yes, sir. so see, so there are many examples which are T naught and there are examples which are not T naught okay good so Sir, please stay for a second. I have to take a screenshot of these examples. Please continue, sir. so every metric space is T naught space every metric space is T naught so why can anyone tell me why this is true Because every metric space is a topological space. so so you are saying every metric space is a topological space therefore it is T naught Uh, no, sir, because as we have seen in the above examples, some of the topological space are not T naught. so here is the reasoning so so suppose you have xb is a metric space okay and x comma y they are in this
Okay, x and y in here. So when you are in a metric space and we have two different points, two distinct points, this means their distance is positive. Do you know this? Yes, sir. Okay, this implies this. And assume that this is, say, epsilon. Okay, suppose epsilon is the distance between x and y. Since this is a positive number, it will be some number. Say this is epsilon. Okay. Then the ball centered at x and radius epsilon by 2, anything less than epsilon, will contain x, but it will not contain the other. Okay? देखो कैसे, यहाँ पर x था, यहाँ पर y Yes, sir. था. आपने क्या किया, ये दूरी एप्सिलॉन थी, आपने एप्सिलॉन से छोटी कोई भी डिस्टेंस लिया, हमने उसको एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया, तो आपने एक बॉल बनाया इसके अराउंड इस रेडियस का. तो आप ये x तो यहाँ पर x है और ये y है, तो y उसके बाहर नहीं. ठीक है. So this is how you see every metric space is T0. Okay. So it may be asked in your examination, so that every metric space is T0 space. So let us see some other example. So usual topology are tau. Tau is usual topology. Okay. This is T0. Why? So this comes from here. So because you know this R tau, where tau is usual topology, this is in fact a metric space. Okay. Or what can you do? You take x and y to different points in R. So this means so take this open set. So you want two open set. So sorry, you want one open set containing x, which does not contain y. So take u equal to x minus plus y by 2 comma x plus y by 2. Okay. Take this, it will work. Okay. So verify it, whether it works or not. Okay. Verify. So I'm saying this will work. So please verify. Similarly, lower limit topology and upper limit topology. These are also T0 spaces. Okay, so use similar things. Okay, so suppose you have two different points x and y, and suppose x is less than y. Okay, then what you do? Take u equal to x comma y x plus y by 2. That will work. It will work. So this will contain x, but it does not contain y. Okay? It clearly does not contain y. Next thing, or similarly, you can take. So this is one part, and another easy thing is so. So this will definitely work, but you may take an obvious say v. Take v equal to y comma say any number z. Okay, where y is less than z, strictly less than z. So this is this is an open set in lower limit topology. Clearly y belongs to v,
but X not in V. Okay, you can see because X is strictly less than Y. Okay. So it's a cofinite. So suppose we take X equal to R. Okay. Is a cofinite topology? Is the cofinite topology T naught in this X? So is this? So this is cofinite topology. Is this T naught? Okay. So let us see. What should we do to show this is T naught? Or I should not say to show this is T naught. Uh, uh, to prove or to disprove. So if we want to prove this is T naught, we have to give an open neighborhood of so say take two any pair of points, distinct points, and you have to produce an open set which contains one of them, not contain other. Or if you want to prove this is not T naught, then you have to give that there exists a pair. So you have to give me a pair of distinct points such that either they are in same, so they are in same open set, or there does not exist any open set which contains those points. Okay. So the second thing cannot be true because so at least one open set is there, X, the whole space is there. So you can say this is the only open set, or any open set containing the point A will contain B. So so these are the ideas. So what you want to do now, whether you want to prove or disprove. हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Sir, as I have no idea about this, so I will want to check this whether it is T naught or not. Okay, so let us check. So take any distinct point, okay, any two distinct points, X in X. Okay, here we are in R, so take any two real number and they are distinct. So what are open sets in the cofinite topology? What are open sets in cofinite topology? हेलो, ये तो आप लोगों को मालूम है ना सभी को? Sir, the open intervals. कोफाइनाइट टोपोलॉजी बात हो रही है. कोई और बताइए कोफाइनाइट टोपोलॉजी. सिंपल क्वेश्चन है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन बताइए भैया. सरोज, अनुराग भारती, यस सर. कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन मालूम है आपको? यस सर. तो बता क्यों नहीं रहे? मैंने पूछा तो बताइए ना. आप बताइए, कोई मतलब कोई तो आगे आइए बताने को. सर मुझे लगा कि आप सर अगर अरे एक्स कोई सेट और टॉ कोई टोपोलॉजी है, हाँ, ठीक है, और जी सर एक्स का सबसेट है, तो जी इंटरसेक्शन ऑफ वाई वाई क्या है? वाई एक अनदर सेट है,
सर जी इंटरसेक्शन जेड या तो एम्प्टी होगा। एक मिनट मैं लिख रहा हूँ। यस आपने सर, कहा एक्स टाउ एक टोपोलॉजी हो गया, टोपोलॉजी है। यस सर, क्या है और बताइए। जी कोई सबसेट है एक्स का। ओके, ये कब इसमें होगा? या तो जी क्या कहते हैं एम्प्टी होगा, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी इज क्या कहते हैं फाइनाइट, या आर में। एक्स माइनस बी इज फाइनाइट। Okay, यस सर। so this is open set. So here we have 2 points, x comma y, x not in y, not equal to y. So take x minus say y point. Okay, this will clearly contain x, and this will clearly, suppose this is called, this is v. Okay, y not in v, y not in v. Okay, so this is an open neighborhood which contains x but does not contain y. Therefore, it is T naught. Is this correct? Yes. ये इसमें किसी को कोई डाउट है? So cofinite topology, similarly co-countable topology, they are T naught. Okay, they are T naught. So in discrete spaces with at least 2 points, they are, you have already seen, they are not T naught spaces. Okay, so any topology, so we will see this, any topology finer than finer than a T naught topology is T naught. Okay, how do you see this? आप कोई भी टोपोलॉजी दीजिए, जैसे हमने ऊपर बोला कि ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या थी, टी नॉट है। हम अगर कोई दूसरी टोपोलॉजी T2 ले लें जो कि फाइनल कोफाइनाइट टोपोलॉजी से, then T2 is T naught. So it's clearly true because every open set here is open here. Okay, because every open set here is open here. Okay? So that will do our job. Okay, so now here is a question. Suppose we have a set X and we have 2 topologies on it, tau 1 and tau 2, be 2 topologies on X. Okay, then what can you say about so you know that tau 1 intersection tau 2 is again a topology. If tau 1 and tau 2 are T naught topology, then what can you say about their intersection? Did you get my question? क्वेश्चन समझ में आया आपको? सर रिपीट कर दिए एक बार। एक सेट एक्स है, इसमें 2 टोपोलॉजीज हैं, टाउ 1 और टाउ 2, बी 2 टोपोलॉजीज ऑन एक्स, बोथ आर टी नॉट. ओके, दोनों टी नॉट है. You know tau 1 intersection tau 2 will be a topology. Is it tau 1 intersection tau 2 T naught? Yes, Okay, sir. no It idea. will be T naught space. Okay, it will be T naught. So here is a, here it is. So this is X. You said that their intersection would be T naught. So T2 and T3, they are T naught. What is their intersection? Do you Phi see and X. my, Phi and X in discrete topology. That is is tau this, 1. is it T naught? No, sir, it is not T naught. Okay, so this means it need not be, this need not be a T naught space. Okay, answer is need not. Now you know the answer, na? Yes, sir. Okay,
Good. So suppose we have a T naught topological space X and we have a subspace Y. Okay. So is subspace Y a T naught space? So you have a topological space X and you have a subspace of X, say Y. If X is T naught, is it true Y will be T naught? So let us see. So to show Y is T naught, what you will take? You will take 2 points, X and Y. Okay, let me call Y1 comma Y2. Okay. So Y1 comma Y2 in Y. Okay. But these are subsets of, so this Y is a subset of X. So these are points in X and assume that Y1 not equal to Y2. Okay. Take two distinct points in Y. Clearly, they are sitting in X. So therefore, they are distinct points of X. So, and we know X is T naught. So what does this mean? Hello? What is the meaning of this? What can you infer from here? Sir, it is T naught. Why is T naught? Because हाँ नहीं, पहले इसको बताइए कि मैंने बोला कि दो पॉइंट लिए डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं और वो एक्स में बैठे हुए हैं और एक्स टी नॉट है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से क्या पता लगेगा आपको? सर यहाँ से ये पता लगेगा कि y1 और y2 इसमें से कोई एक, चाहे हाँ, y1 या y2 का एक ओपन नेबरहुड हमें मिल सकता है जो कि y2 या y1 को कंटेन नहीं करता है। there exists open set U such that Y1 say Y1, okay? So we can, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। तो जहां पर दोनों में से कोई भी हो सकता है तो एक आपने चूज करना है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी एज्यूम Y1 in U but Y2 not in U. Okay? Yes, sir. So now complete this. आपने कहा Y को आप T नॉट कहेंगे, क्यों? Sir, as y1 and y2 are distinct in x and y is a हाँ subset of x, then obviously y1 and y2 will be distinct in y also. हाँ ठीक है, वो तो हमने पहले से लेते हुए चले ना, Y1 and Y2 डिस्टिंक्ट इन Y, इसकी यहीं से हम लेते हुए चले, देन हमें वो X में मिला, उसके बाद हमको एक ओपन सेट मिला इन X. ओके, दिस इज ओपन सेट इन X, नॉट इन Y. नाउ question is, can you find an open set in Y such that that open set contains Y1 but does not contain Y2? Can you do that? अच्छा, ओपन सेट Y में कैसे होंगे? सब स्पेस टोपोलॉजी में ओपन सेट्स कैसे दिखते हैं? कोई भी बताइए, जिसको मालूम है कोई भी बताइए, चुप मत रहिए। हम सब स्पेस टोपोलॉजी में हैं और सब स्पेस टोपोलॉजी में ओपन सेट्स किस फॉर्म के होते हैं? हेलो हेलो हाँ, सर, उसके इंटरसेक्शन के फॉर्म में।
किसके इंटरसेक्शन मतलब किसके साथ? सर क्योंकि सबसे y के साथ में और जो y के साथ। ओके, अभी तो आप मुझे यहाँ पर कोई ओपन सेट दे सकते हैं जो y1 को कंटेन करता हो लेकिन y2 को नहीं कंटेन करता हो? ओपन सेट इन y। ओके, हम वो बता रहा हूँ मैं, एक फिगर बना रहा हूँ। ये x था। ओके, यहाँ पर मेरे पास y है, मान लो ये y है। ये दो पॉइंट हैं y1 और y2। ओके, आपने x में मुझे बताया कि भैया आपको एक ओपन सेट u मिला जो y1 को कंटेन कर रहा है और y2 को कंटेन नहीं कर रहा है। क्या आप मुझे अब एक ओपन सेट y में प्रोवाइड करवा सकते हैं जो y1 को कंटेन करे और y2 को कंटेन ना करे? आपने बोला इंटरसेक्शन लेते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन अब यहाँ पर किसके साथ किसका लेना पड़ेगा? आपका आइडिया ठीक था, उसको आप एग्जीक्यूट कीजिए। सर y1 के साथ में y किसका इंटरसेक्ट? दो चीजें होंगी ना, वो दो कौन सी चीजें हैं जिनका इंटरसेक्शन लेना चाहिए? सर आप y1 इंटरसेक्शन u। तो वो तो y1 इंटरसेक्शन u तो y1 ही होगा। लेकिन आपको कैसे पता कि y1 इंटरसेक्शन u जो है वो y1 होगा? आपको कैसे पता कि ये y1 एक ओपन सेट है y में, कैपिटल Y में? आप फिर से याद कीजिए, आपने ओपन सेट सबस्पेस टोपोलॉजी में क्या डेफिनेशन दी थी? सबस्पेस टोपोलॉजी में ओपन सेट की डेफिनेशन आपने क्या दी थी? याद कीजिए, अभी तो आपने वो मुझे बताया था ना। सर नहीं लिंक कर पा रहे हैं। अभी थोड़ी, चलो इसको छोड़िए। अभी आपने जब मैंने यहाँ ऊपर पूछा था कि ओपन सेट y में क्या होगा, तो आपने क्या आंसर दिया था? y इंटरसेक्शन u, और u जो कि टाउ का y मेंबर होगा। y इंटरसेक्शन u, वो टाउ y का मेंबर होगा। यहाँ पर u जो है वो y टाउ का मेंबर था। ठीक है, तो इस u इंटरसेक्शन y को भी तो आप ले सकते हैं ना। यहाँ पे ये y1 इंटरसेक्शन u क्यों लिया? मैंने आपको बोला एक ओपन सेट बनाइए y में, तो आप मुझे ये बताते हैं जो कि y1 को कंटेन करता है, बिलोंग करता है, y1 इसमें बिलोंग करता है ना? यस सर। ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, ये वाला पार्ट, ये y इंटरसेक्शन u है, दिस विल बी ओपन, ओके, and it contains y1 but it does not contain y2, correct? यस सर। So this part is open in y, therefore subspace of a T naught space is T naught. Subspace of a T naught space is T naught. Okay, so next thing, next question, whether, so this means this T naught is a hereditary property. Being T naught is a hereditary property. तो ऐसे हम पूछते थे फिर क्या T naught एक topological property है? So this means is homeomorphic image of a T naught space is T naught. Okay, so homeomorphic image of a T naught space is T naught, whether this is true. So in fact this is true. Here is the result which says that homeomorphic image of a T naught space is T naught. So इसका मतलब क्या है? We have two topological spaces x and y. X and y are
to topological spaces. Okay, f from x to y be a homeomorphism. Homeomorphism means it is one on two continuous and an open inverse line. image. Inverse image is continuous means open line. Okay, so remember this. Inverse image is continuous means it is an open line. Okay, so then if x is t naught, then y is also t naught. So this is our, so we will prove this. So कैसे करेंगे बताइए आप, हमें प्रूव करना कि y t नॉट है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे स्टार्ट करेंगे, चलिए साथ साथ करते हैं। डेफिनेशन देखिए, बोलिए भैया, कोई तो बोलिए, कोई भी बोलिए, शुरुआत कीजिए, उसके आगे देखते रहते हैं क्या क्या होगा। टी नॉट स्पेस के लिए क्या चाहिए सबसे पहले, हेलो हेलो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? सर, आवाज आ रही थी सर, मेरा मैं लेफ्ट हो गया था सर नेटवर्क इशू की वजह से। हाँ ये बताइए, हमें प्रूव करना है कि y टी नॉट स्पेस है, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो कैसे चलेगा बताइए ना, आप लोग बोलेंगे नहीं। 9 लोग यहाँ पर हैं, 9 में से 1-2 लोग अभी बोल रहे थे। आशीष प्रताप सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? आशीष प्रताप सिंह, अर्पित राज, अर्पित, किस किस को मेरी आवाज आ रही है, कोई एक तो बोलिए। यस सर। अर्पित, आपको मेरी आवाज आ रही थी? यस सर। तो बोल क्यों नहीं हो भैया? और ये आशीष आपके मित्र है ना? सर, आया ना? to show that y is अर्पित, मेरा एक क्वेश्चन है। अर्पित, first we will, yes sir, अर्पित, yes sir, please मैंने say। पूछा क्या आशीष आपके मित्र हैं? सर अगर आपके ट्रूली बोलूं क्लासमेट है, सर आप उनको आप ट्रूली उनको बोलूं तो जानते मेरा हैं? कोई फ्रेंड नहीं है सर। मेरे क्लासमेट में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मेरा किसी से कोई वो नहीं। आप उनको जानते हैं? एज ए क्लासमेट। एज ए क्लासमेट, कभी उनसे बात हुई? सर बातें हुई थी, काफी लंबी चौड़ी हुई है, फर्स्ट सेम से हाँ, लेकर के अच्छा, सेकंड सेम में नहीं हुई बात थी। बात हुई तो उनको बोलिए, शायद क्लास अटेंड, वो क्लास ज्वाइन करते हैं और वो शायद अटेंड करते नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। जब मैं उनसे कुछ नाम बोल के बोलता हूँ तो कुछ बोलते नहीं है। तो उनको बोलिए या तो आप क्लास अटेंड कीजिए, और अटेंड कीजिए मीन्स आप प्रेजेंट रहिए, आप सुनिए, बोलिए, सब कुछ करिए। यस जब सर, यहाँ से एज मैं आई नो ही इज वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। देखिए, गुड होना वो अलग बात, स्टूडेंट सिंसियर होना और ये सब चीजें अलग मैटर करता है। ठीक है, आप क्या क्या अपने एग्जाम में कैसा कर रहे हैं, लेकिन अब मैं इतनी देर से उनका नाम पुकार रहा हूँ, वो अपने को अनम्यूट करके बोल नहीं सकते, तो इसका मतलब गड़बड़ है ना कहीं ना कहीं। ये चीजें दिक्कत करती हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है।
ओके, मेरा क्वेश्चन था कि किसी स्पेस को टी नॉट प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सर हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेने पड़ेंगे उस स्पेस के, और Good. फिर हम उन दोनों के नेबरहुड फाइंड आउट करेंगे, दोनों या किसी उन एक के। दोनों में से हाँ और किसी एक उसमें ऐसा फाइंड आउट दूसरा करेंगे, अगर हम इस तरीके से पा सकते हैं एनबीडी की जो किसी एक का कि वो दूसरे को कंटेन नहीं करता है, तो फिर हम बोलेंगे कि वो टी नॉट स्पेस है। ओके, चलो ठीक है। तो आपने कहा कि आपको क्वेश्चन मालूम है क्या करना है। हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस थे, एक होम्योमॉर्फिज्म था जिसमें से एक्स टी नॉट है, हमें प्रूव करना था वाई टी नॉट है। गुड, आपका दो पॉइंट लीजिए, तो लिखिए दो पॉइंट, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, इज दिस करेक्ट? यहाँ पर हमारे पास y है, इधर यस x सर। था, एक मैप है f से। f क्या क्या है? f होम्योमॉर्फिज्म है, तो ये 1 1 भी है, ये ऑन टू है, ये कंटिन्यूअस है, और ये ओपन मैप है। ओपन मैप या फिर हम कहें कि इनवर्स इज कंटिन्यूअस, दोनों की बात सुन। ठीक है, ये सब है। यस सर। तो हियर x, दिस इज y. Now you took 2 points x and y here, two distinct points. Okay, so what can you say from this figure? आपको मालूम है x t नॉट है, तो आपको इसका यूज करना है, x इज t नॉट, तो इसके लिए क्या करोगे आप? सर चूंकि y में डिफरेंट है x और y, तो उनकी जो इनवर्स इमेजेस है वो x में है, तो वो भी डिफरेंट होंगी, और x जो है क्यों पहले से ही टी नॉट हो रखा है, ऐसा क्यों होगा? बिकॉज द मैपिंग इज 1 1 एंड ऑन टू। सो इनका जो इमेजेस होंगे f इनवर्स x, f इनवर्स y, दे आर डिस्टिंक्ट। ओके, दे आर डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब कोई एक ओपन सेट मिलेगा, सपोज u है जो कि f इनवर्स x को कंटेन करेगा, okay? और f इनवर्स y को नहीं करेगा, तो ये u मिला। ओके, ठीक है। जी सर। नाउ अब आप क्या देखेंगे कि क्योंकि ये f इनवर्स y को कंटेन नहीं कर रहा है u, सॉरी u, अब आप इसकी इमेज यहाँ देखेंगे, ये x था, ये y। ओके, u की इमेज अंडर f क्या बनेगा? fu बनेगा, ये fu होगा। सिंस f इज 1 1 एंड ऑन 2, therefore f इनवर्स u की इमेज आपको fu, सॉरी u की इमेज आपको fu मिली। fu में पक्का x तो वहां पर होगा। दिस इज योर u, दिस इज fu। okay, so you know x belongs to fu, and you also know y does not belong to fu. Okay, this is because f is 1 1, correct? And this f inverse u does not belong to u. तो ये दोनों से आपको ये बात पता चले। okay, now why this f u is an open set? Is fu open set in y? आपने एक सेट तो मुझे दे दिया, आपने कहा था कि भैया ये नेबरहुड होना चाहिए, नेबरहुड होने के लिए इसको ओपन सेट बनाना पड़ेगा ना हमें। सर क्योंकि जो मैपिंग है वो x और y होम्योमॉर्फिक है एक दूसरे के, और उसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं, 1 1 ऑन टू, कंटिन्यूअस और इनवर्स इमेजेस कंटिन्यूअस। और हम एक थ्योरम जानते हैं, उसका स्टेटमेंट मुझे अच्छे से याद नहीं है सर, लेकिन ये है कि इनवर्स इमेजेस जो होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के, वो ओपन सेट्स होते हैं, इसी हाँ तरीके का कुछ। हाँ, तो सर इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन इफ f is continuous, if f from x to y is continuous, and only inverse image of open set in y is continuous, sorry, is open in x. ओके, तो अब यहाँ पर आप
किसकी कंटिन्यूटी यूज कर रहे हैं, एफ की कंटिन्यूटी या एफ इनवर्स की कंटिन्यूटी? आप एफ यू को ओपन करने के लिए एफ इनवर्स की कंटिन्यूटी यूज कर रहे हैं कि एफ की कंटिन्यूटी यूज कर रहे हैं? सर एफ की कंटिन्यूटी यूज करनी पड़ेगी सर। ओके, आप कह रहे हैं कि देखिए एफ की कंटिन्यूटी, एफ इज कंटिन्यूअस, ओके, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, दिस इज कंटिन्यूअस, दिस मीन्स you open in y implies f inverse u open in x। ये था f की कंटिन्यूटी से। यहाँ पर सॉरी जो सर, है एफ इनवर्स ये इज u तो हमारा भैया, ये u हमारा कहाँ पर है, x में है, हम fu को ओपन कर रहे हैं, fu यहाँ y में चला गया, तो आप किसकी कंटिन्यूटी यूज कर रहे हैं? सर एफ इनवर्स की लेके चलनी पड़ेगी। क्योंकि f इनवर्स का इनवर्स क्या है, f, ओके, जी सर। इसीलिए आप fu कह पा रहे हैं ना इसे, इनवर्स इमेज ऑफ f इनवर्स इज f की, ओके, सो f इनवर्स u इज सेम एज f u। सो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओपन मैप, बिकॉज f इज एन ओपन मैप, और यू से वी यूज द continuity of inverse map f u is open। so here you have given an open set fu which contains x but does not contain y, therefore y is t naught, okay, is this correct? Yes sir, please continue. Then comes to the product space, so in product space what we have, let me write this, I will not prove this, so let xi, so xi tau y tau I, these are topological spaces which are T naught, okay, then this product topology on say x is T naught if and only if each xi is T naught. So this is an exercise for, okay. Here comes to another notion, T1 spaces. T1 spaces which is stronger than T naught but weaker than Hausdorff space. So okay, here we have again we have a topological space and we have two distinct points x and y. Now what we need two open sets containing x and containing y, okay. So देखिए अभी तक हमने तीन चीजें देखी हैं, तीनों, ये x था, ये भी x है और यहाँ भी x है। तो टी नॉट के लिए हमने क्या कहा था, x में कोई एक ओपन सेट मिले जो x को कंटेन करे y को नहीं करे, ये टी नॉट था, इज दिस करेक्ट? Yes sir. नाउ कम टू T1 एंड हाउसडॉर्फ स्पेस, ओके। दो चीजें आपने पढ़ ली हैं, एक हाउसडॉर्फ को हम T2 भी कहते हैं, ओके, वी कॉल हाउसडॉर्फ T2। so for hausdorff what you have two distinct point and two open sets like this, they are disjoint, okay. Then there is another notion which is in between T naught and T2, means it is stronger than T naught but weaker than T2. So here again we have two distinct point x and y. So in this case each of them has a neighborhood, okay. So but there is no restriction about their intersection. So here what we have, it is
it is like this for both x and y. Okay, so this means for any pair of distinct points x, y in x. So when we say distinct, this means they are not equal. Here exists open sets u and v in x such that x belongs to u, sorry, x belongs to u, y belongs to v, and y does not belong to u and x does not belong to. Okay, is this correct? तो आपको दो ऐसे सेट मिले ओपन सेट, तो एक जो मीन्स दोनों ओपन सेट दोनों पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं, लेकिन से u contains x but u does not contain y, v contains x but does not contain v contains y but does not contain x. okay? ऐसे तो आप देखते हैं कि हर एक हाउस ड्रॉप स्पेस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. So x has a neighborhood u. So if capital X is house drop, then you know this x has a neighborhood u which does not contain y, and y has a neighborhood v which does not contain x. So here are some examples. So any doubt in the definition of T1 space? किसी को कोई प्रॉब्लम है T1 स्पेस की डेफिनेशन में? सर फिगर से क्लियर हो गया. फिगर से क्लियर हो गया. तो हमें क्या करना है, देखिए अभी तक हमने पहले टी नॉट से शुरू करते हैं, टी नॉट से शुरू करते हैं. तो टी नॉट एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी नॉट होगा अगर कोई भी पेयर ले हम डिस्टिंक्ट पॉइंट का. क्या होना चाहिए हमें हमारे पास, बताइए, आप बताइए. सर इनमें से किसी एक x या y का नेबरहुड जो होगा वो दूसरे को कंटेन नहीं करेगा. ओके, या ऐसा हो और या फिर ऐसा हो ना, या ऐसा. ये तो भैया टी नॉट था. अभी T1 के लिए बनाते हैं. ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए. T1 के लिए ये x है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है. अब क्या होगा, इन दोनों के नेबरहुड अब और इस प्रकार होगा नहीं हो, डिसजॉइंट नहीं होंगे. नहीं भी हो भी सकते हैं, हमें नहीं पता. डिसजॉइंट हो भी सकते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं डिसजॉइंट होने या ना होने में. ठीक है, हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर. सर अभी को आई है सर. हेलो सर. ये x है, ये y है. हाँ हाँ, बोलिए. जी सर प्लीज कंटिन्यू. अभी को आवाज आई है सर. हाँ, x जो है, x के लिए एक ओपन सेट मिले जो u, x के लिए एक ओपन सेट मिले u जो कि x को तो कंटेन कर रहा है लेकिन y को नहीं कर रहा है. ठीक है, और y के लिए भी एक ओपन सेट मिले v जो कि y को कंटेन करे और x को ना करे. ऐसा हो सकता है, लेकिन तो ये भी हो सर इस केस में तो ये हाउस ड्रॉप बन जाए. हाउस ड्रॉप भी बन जाएगा, हाउस ड्रॉप भी बन जाएगा इस केस में. ओके, ये T1 है और ये हाउस ड्रॉप भी है क्योंकि मैंने ऐसा ऐसे बना दिया है. अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसा बनाता हूँ कि ये हाउस ड्रॉप ना दिखे आपको. तो मैंने कहा ये एक V मिले जो कि y को कंटेन करता है, x को कंटेन नहीं कर रहा है. ओके,
तो इस केस में ये So, sir, in this हाउसड्रॉप way, नहीं we रहा can ना। say that every Hausdorff space is T0, T0 space as well as T1 space. T1 space, बहुत बढ़िया। Every हाउसड्रॉप space is T1 as well as T0. Okay, and you can say from here every T1 space is T0. Do you see this point? ये देखो, यस सर। अगर मैं इस V को इन दोनों में से किसी एक को आप ले लो, आपका ये T0 बन गया, है ना? Clear? So every T1 space is T0. But is converse true? Is every T0 space T1? No, sir, because for T0 we need only one neighborhood of any one of the distinct point. हाँ, तो आपको अब आप कोई एग्जांपल देंगे जो कि T0 तो है बट T1 नहीं है? आपने एग्जांपल देखे हैं आज, इन्हीं में से The कोई एक two काम कर सकता है? हाँ बोलिए, चलिए मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको एग्जांपल्स में। कहाँ था sir, ये? five हाँ, यहाँ पर इनमें से कोई uh, uh, इनमें से कोई और T1 है? हेलो, इनमें से कोई ऐसा स्पेस है जो T1 नहीं है? जैसे ये वाला T1 नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट T0। इनमें से कौन सा स्पेस T1 है, कौन सा नहीं है? sir, इज tau1 two tau1 T1 है? T1 हेलो, क्या tau1 T1 है, स्पेस है? सर मेरी आवाज लग रहा है आप तक नहीं जा पा रही है सर। टाउ 2 और टाउ 3 जो है वो T1 है। टाउ 1 सर T0 ही tau2 नहीं है और तो फिर T1 कहाँ होगा? ओके, ये तो T1 नहीं है। ओके, नॉट T1। tau2 आपने क्या कहा, क्या है? हेलो, tau2 के लिए बात करिए, क्या है tau2? आप लोगों को सर आवाज आ टाउ 2 रही है? मुझे T1 लग रहा है सर, क्योंकि ओके, इसमें ए का ठीक है, भी एक दो मिनट। ओपन। दो पॉइंट है, ए और बी। एक्स तो वहां पर है, और ये वाला भी खुद एक, ये ए है, ये बी है। ओके, जी सर। आपने मुझे बोला कि ए और बी के लिए ओपन सेट मिलेंगे, दोनों के लिए मिलेंगे जो कि एक दूसरे को कंटेन ना कर रहा हो, है ना? ए के लिए तो आपने ये वाला ओपन सेट दिया जो बी को कंटेन नहीं कर रहा है। बी के लिए ऐसा कौन सा ओपन सेट है जो ए को कंटेन नहीं करता? सर बट T1 के लिए तो हम इंटरसेक्शन भी पा सकते हैं ना, वो अगर हाँ, लेकिन देखो मेन कंडीशन क्या है? मेन कंडीशन है कि हमें दो ओपन सेट मिले, इंटरसेक्शन पा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये जो दोनों ओपन सेट है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं। मींस इन दोनों में से एक ही पॉइंट कंटेन कर रहा है, या तो एक्स को करेगा या वाई को करेगा। देख पा रहे हैं आप? नहीं सर। कंडीशन क्या है? देखिए, कोई भी आपने पेयर लिया, डिस्टिंक्ट पेयर लिया, आपको ओपन सेट मिले यू और वी। यू एक्स को कंटेन करता है, वाई को नहीं कंटेन करता। वी वाई को कंटेन करता है, एक्स को नहीं करता। आप फिगर से उसको देखिए, ये जो यू है वो समझ गया एक्स सर, को समझ कंटेन गया कर रहा है। जी सर। और ये जो X है उसमें A और B दोनों आ जा रहे हैं, इसलिए ये नहीं होगा T1 स्पेस। वो T1 स्पेस नहीं होगा। तो इस स्पेस का नाम जानते हैं आप, जो अभी ऊपर नाम लिखा था, उस स्पेस को क्या कहते हैं? उसका एक नाम है, सरपंच की स्पेस कहते हैं।
Okay, so Okay, sir. x equal to a comma b, tau equal to empty set x a. दिस स्पेस ए या बी दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, इज टी नॉट बट नॉट टी वन. क्यों? क्योंकि आप दो अलग अलग ऐसे नेबरहुड नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो किसी एक पॉइंट को बिलोंग करता है, दूसरे को, सॉरी, किसी एक पॉइंट को कंटेन करता है, दूसरे को कंटेन नहीं करता है ना. ओके, नाउ there is a very nice property of T1 spaces. So in spaces में every singleton set is closed. Okay. Topological space X is T1 if and only if every singleton in X is closed. तो ये कैसे करेंगे? Every singleton in X is closed. तो ये बहुत इजी सी बात है. अगर हर सिंगलटन क्लोज्ड है तो एज्यूम, ये देखो कैसे, मान लो हम ये प्रूफ ये मानते हैं कि एवरी सिंगलटन इज क्लोज्ड, तो इसका मतलब x माइनस सिंगलटन दिस इज ओपन. ओके, जी दिस सर. करेक्ट. जी सर. अभी आपने प्रूव करना है कि भैया ये x, आपने दो पॉइंट लिए x नॉट इक्वल टू y, तो आपको दो नेबरहुड मिले x माइनस x एंड v y माइनस y. ओके, कौन सा नेबरहुड किसका है? कौन सा ओपन सेट x को कंटेन करता है, कौन सा ओपन सेट y को कंटेन करता है? V contains X and U contains Y. और v डज नॉट कंटेन y, u डज नॉट कंटेन x. ये भी ट्रू है, Yes sir. है ना? Yes तो sir. आपको मिला y belongs to u and x not belongs to u, x belongs to v and y does not belongs to u. तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया? T1 हो गया. जी सर. क्लियर है ना? जी सर. ओके, एक पार्ट तो बहुत सही है. दूसरा वाला पार्ट, अगर हम बोले कि ये T1 है, ओके, स्पेस T1 है, और हमें प्रूव करना है कि Every singleton जो होगा एवरी वो सिंगलटन इज वो क्लोज्ड होगा. कैसे करेंगे? तो क्लोज्ड की डेफिनेशन क्या है? या तो आप प्रूव करते हैं कि इसका कंप्लीमेंट ओपन हो, या आप प्रूव करते हैं कि ये खुद का क्लोजर हो. Yes sir. है ना? ऐसा भी तो देखते हैं कि इसका क्लोजर यही होगा और कोई नहीं हो, कोई दूसरा पॉइंट नहीं है इसमें. तो आप एक सिंगलटन सेट लीजिए, आप प्रूव करिए कि ये जो है क्लोजर ऑफ एक्स इज एक्स. तो इसका मतलब आप ये प्रूव कर रहे हैं कि कोई और पॉइंट y जो कि x के इक्वल नहीं है इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगलटन सेट x. Okay, this is our claim. To show this means Yes we sir. will Because show every closed set contains each of its limit points. that no point y which is not equal to x is a limit point of x. ओके, अब आपको मालूम है कि y और x दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, तो आपको T1 के लिए T1 के डेफिनेशन से मिलेगा देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स u and v in x such that
x in u, y not in u, y in v, y in v, x not in v. करेक्ट? ये T1 की डेफिनेशन थी। जी सर। लेकिन अगर y एक लिमिट पॉइंट होता, if y is the limit point of this set, then every neighborhood of y will intersect, it would intersect with this set. Okay, but it is not intersecting. This neighborhood of v is not intersecting with singleton x. Okay, this implies v intersection this is empty. You see this? And this implies y is not a limit point of singleton set x. तो आप ये हर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट y के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब x का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, केवल x हो सकता है, हमें नहीं पता, बट दिस इज सेम दिस इज सेम एज क्लोजर ऑफ x is x and x is closed. Okay, is this correct? सर थोड़ा सा If नहीं you say समझ में आया। यहाँ पे हाँ यहीं पे सर एक जो आपने लिखा है। क्या लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है पहले बताइए। एक पॉइंट y जो है वो y इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट A, इफ बताइए कब होगा। इफ हाँ every neighborhood of y east of a instead of in addition to y. every neighborhood of y, every neighborhood v of y, every neighborhood of y contains at least contains one at least point of in addition one point of a A in addition to y. except y. Okay, Yes sir. Yes sir. तो इसका मतलब v इंटरसेक्शन A नॉन एम्प्टी होना चाहिए, सॉरी v इंटरसेक्शन A माइनस y इज नॉन एम्प्टी। जी जी सर। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको ऐसा सेट मिला v जो कि x को नहीं कंटेन कर रहा है, तो आप यहाँ से क्या कर रहे हो, v इंटरसेक्शन x जो है वो क्या है, एम्प्टी है जी सर। ना। हाँ तो v इंटरसेक्शन x एम्प्टी है, तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे वो भी एम्प्टी होगा। जी सर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो y है वो लिमिट पॉइंट नहीं है किसका, इस सेट का। जी सर। एक ही जगह यहाँ पर सिंगलटन है x है ना। जी सर नाउ इट इज क्लियर। हाँ, सो देयरफॉर क्लोजर ऑफ x इज x। फिर अगर आप ये कहते हैं कि सिंगलटन सेट क्लोज्ड है एंड यू नो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, finite union of closed set is closed, therefore in a T1 space every finite set is closed. This is the corollary, finite set is closed. Okay, ओके सर। सर ये is जो हम correct? टी नॉट हाँ सर ये जो हम टी नॉट टी वन टी टू स्पेसेस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे केवल 2 पॉइंट्स की बातें कर रहे हैं, क्या हम 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स की बातें कर सकते हैं? हाँ, 2 से अधिक पॉइंट देखिए, म्यूचुअली आप 2 पॉइंट उठाएंगे, 3 पॉइंट उठाएंगे तो म्यूचुअली आप देखेंगे फिर, ठीक है, 2 जी पॉइंट सर। के साथ काम करेंगे। ओके सर। ओके सर। तीन उठाए आपने, 3 में से 2 एक बार उठाइए, 2 एक बार उठाइए, 3 पेयर बनेंगे, है ना।
जी सर। Okay. Now, what about कोफाइनाइट टोपोलॉजी? अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट सेट में कोफाइनाइट टोपोलॉजी ले, क्या कोफाइनाइट टोपोलॉजी T1 होगी? आपने देखा था कोफाइनाइट टोपोलॉजी T0 है, क्या कोफाइनाइट टोपोलॉजी T1 होगी? अभी तो ये ठीक है, इस रिजल्ट का यूज करिए। कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्लोज सेट कौन से होते हैं? या तो एम्प्टी सेट है या एक्स है, इसके अलावा ये तो टेस्ट 1 का क्वेश्चन भी है भैया आपके टेस्ट, अगर आप लोगों ने टेस्ट 1 दिया है उसके बाद मैंने आंसर भी बताया है, और कम से कम आपको ये तो आंसर जैसा भी लिखा आपने उसके बाद तो उसको सॉल्व किया होगा ना आपने घर में दोबारा से। सर हर एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्लोज सेट किस फॉर्म के होंगे? या तो नॉन ट्रिवियल क्लोज सेट, या तो एम्प्टी सेट है वो क्लोज सेट, जी एक्स है क्लोज सेट, इनके अलावा हेलो सर, क्या मेरी आवाज जा रही है? आ रही है। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए, आपकी आवाज आ रही थी। हेलो, हेलो सर। याद करिए कोफाइनाइट टोपोलॉजी में जो हेलो क्लोज सर। सेट है। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे कोफाइनाइट टोपोलॉजी हम डिफाइन करते हैं तो टाउ सी एफ इज इक्वल्स टू होता है जी इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट जी इज एम्प्टी और एक्स माइनस जी इज फाइनाइट, हाँ, एंड वी ऑल्सो नो तो दैट यहाँ से क्या पता चला? every yes sir। यहाँ से क्या आपने कंक्लूड किया? सर यहाँ से ये चूंकि x माइनस जी जो फाइनाइट है ये इसी तरह के एलिमेंट्स होंगे यहाँ से। ये तो आपने ओपन की डेफिनेशन दी, मैं पूछ रहा हूँ क्लोज सेट्स कौन से होंगे? तो और ये सब जो so closed sets are complement of open sets, and you know complement of open sets are finite. Okay, either finite or empty. So this means either X empty set or any finite set. So any finite set in a cofinite topological space is closed. क्लोज्ड And you have already seen कोई भी फाइनाइट सेट लेंगे वो क्लोज्ड होगा T1 स्पेस में, ठीक है। और आपने बोला कि इनफैक्ट सिंगलटन इज a finite set. So each singleton is a closed set in cofinite topology, and this theorem tells that cofinite topological space is T1. Okay, so every cofinite topological space is T1 is space. Okay, T1 space। cofinite topology is T1। वो देखना और आसान है, x y in x not equal to y, take u equal to x minus x, this is open,
V equal to X minus Y. This is open. Okay, this U belongs Y, so U contains Y and U does not contain X. V contains X and V does not contain Y. Okay. So from here you see cofinite topological space is T1. Okay, T1. I'll stop here. Please read these notes. Okay, and if you find some problem, then please discuss. Okay, we will meet tomorrow. Thank you very much, sir.